Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly. Everybody join fast. Session is started. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly. Unlimited GB. ये कौन है unlimited GB? Good evening. So good evening to all. I hope I am audible to you clearly. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly. Good evening to all. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly. So, Akanksha Kavade, okay, Vishnu Kavade. Yes, sir, yes, sir. So, I hope I am audible to you clearly. So, today we will see the next part in the carbohydrates. So, just check, let me check once. So, we have started with our biochemistry of carbohydrate, and we have seen some points from biochemistry of carbohydrate. So we'll see the remaining points. So what we have seen in the yesterday's session, so we have seen up to this part, we have seen already. We have seen yesterday the different disaccharides, okay, disaccharides. We have seen the different disaccharides, and lactose, we have seen the maltose, we have seen the sucrose, we have seen the lactulose. So today we'll see the polysaccharides. Today we'll see the polysaccharides. So we have started out our carbohydrate chapter, and from that we have seen the introduction to the carbohydrate. We have seen the properties of monosaccharides. We have seen the identification test for monosaccharides, right? So after that, in the previous session also we have seen the disaccharides. So important disaccharides we have completed. These things are very, very important for your upcoming GPAT Niper DI Pharmacist exam. So polysaccharides, right? So what do you mean by polysaccharide? So what do you mean by polysaccharide? So polysaccharide means what? So polysaccharide means, poly means lot of, poly means more than 20. So we have seen that carbohydrates are classified into three class majorly. First one was the monosaccharides, second one was the disaccharides, and third one was the oligosaccharides, and last one is the polysaccharides, right? So monosaccharide, disaccharide, oligosaccharides, and polysaccharides. So disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharides, they comes under the oligosaccharides. Now, mono means one and monosaccharides. So in the monosaccharides we have only one monomer of sugar. So in the oligosaccharides you have 10 to 20 monomers of sugar. In the disaccharide you have two monomers of sugar. In the trisaccharide 3. Okay. Polysaccharide means what? More than 20 monomers of sugar. If more than 25 monomers of sugar are there, known as a polysaccharide, known as a polysaccharides.
Now in the polysaccharides you have again two type of polysaccharide. There are two type of polysaccharide. So polysaccharide means what? Repeating monomers of sugars. Repeating monomers of sugar. Now there are two type of polysaccharide. First polysaccharide is nothing but the homoglycans. First क्या होता है? Homoglycans. Homoglycans means what? Homoglycans or also known as a homopolysaccharide. There are two type of polysaccharide. First one is a homopolysaccharide or also known as a homoglycan. Homo मतलब क्या? Homo मतलब same. So what happens in this homopolysaccharide? So they consist of a repeating monomers of same sugar. So suppose अगर आपको पॉलीसैकेराइड किसका है? ग्लूकोज का है, तो ग्लूकोज के ही रिपीटिंग मोनोमर्स होंगे उसमें. सो इफ रिपीटेड मोनोमर इज ऑफ ओनली वन शुगर नोन एज होमोपोलीसैकेराइड. नाउ हेटेरोपोलीसैकेराइड और हेटेरोग्लाइकॉन, सेकंड टर्म इज अ हेटेरोग्लाइकॉन और हेटेरोपोलीसैकेराइड. So there are two polysaccharides, classes of polysaccharide. First one is a homopolysaccharide and second one is a heteropolysaccharide. So homopolysaccharide also known as a homoglycans. So they consist of the same repeating monomers of sugar. Heteroglycon or heteropolysaccharide they consist of a different sugar. Okay, मतलब होमोपोलीसैकेराइड में क्या होगा कि एक ही शुगर मॉलिक्यूल, जैसे ग्लूकोज हो गया तो बस रिपीटिंग मोनोमर्स ऑफ ग्लूकोज है ना. अगर फ्रुक्टोज हो गया तो रिपीटिंग मोनोमर्स ऑफ फ्रुक्टोज. वो होमोपोलीसैकेराइड में और होमोग्लाइकन्स में भी. हेटेरोपोलीसैकेराइड में क्या होगा कि ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस मानोज, मतलब different monomer okay of sugar. So heteroglycan or heteropolysaccharide. Now first one is a example of your homopolysaccharide known as a starch. First one is the example of your homopolysaccharide known as a starch. Homo मतलब क्या है? In the starch is nothing but the repeating monomer of glucose. What is starch? It is a monomer of, it has a repeating monomer of glucose. So in the starch you have glucose. So glucose is a repeating monomer in the starch. So it is a polymer of glucose. You can say starch का है, starch is a polymer of glucose. Starch is a polymer of glucose. Now this starch occurs in the plants. जैसे आपका पोटैटो में क्या आता है? पूरा स्टार्च आता है ना. जैसे आपका स्वीट पोटैटो में क्या आता है? पूरा स्टार्च आता है. स्वीट पोटैटो मतलब क्या होता है? शक्करकंदी. स्वीट पोटैटो मतलब क्या? शक्करकंदी. आप खाते हो ना जब आपको फास्ट होता है, ऊपर से दूसरा अपन खाते हो, क्या खाते हो? रताळू खातो. तो रताळू म्हणजे काय? स्वीट पोटैटो. सो इन दैट आल्सो यू हैव स्टार्च. ओके, स्टार्च occurs in the plant as a storage food. It is a storage food in the plant. Right? It is a storage food in the plant and it is composed of a polymeric unit of glucose. Glucose का polymer है. क्या है? Glucose का polymer. What is starch? Starch is a homopolysaccharide. It is a polymer of glucose. It is a polymer of glucose. It is a occur in a plant as a storage food. Plant में storage food as a मिलता है, composed of a polymeric unit of glucose. Right? Now there are two component of starch. There are two component of starch. First component is known as amylose and second component is known as amylopectin. There are two component of starch. Starch के मॉलिक्यूल में दो पार्ट होता है, एक होता है amylose, एक होता है amylopectin. Now starch has a two parts, right? As I told you, starch is a two part. So first one is the amylose. What is amylose? So amylose is nothing but it's a one of the part of starch and it is composed of 15 to 20% in the starch. So अगर total starch है तो उसका 15 या 20% क्या रहेगा? Amylose. So out of 100% starch you will find 15 to 20% amylose and amylose is a linear polymer. Amylose is a linear polymer. It is an unbranched linear polymer. Now in the each branch occur in a each amylose structure. Amylose के structure में कितने glucose molecule होंगे? In the structure of amylose you will find around 250 to 300 glucose molecule. So in case of amylose it is a straight unbranched linear polymer which is a 15 to 20% of total starch and 250 to 300 glucose molecules are present in the one amylose molecule. Now what is the linkage present in the amylose? तो amylose क्या है? amylose भी क्या है? ग्लूकोज का पॉलीमर है. तो in this one molecule of glucose is attached with the another molecule of glucose. So one molecule of glucose is bound with the another molecule of glucose via glycosidic bond. So what type of bond? Alpha 1,4 means what?
alpha D glucose of one carbon atom was first carbon atom of one glucose and fourth carbon atom of second glucose molecule. तो glucose plus glucose कैसे अटैच है 1,4 linkage. In case of amylose, glucose plus glucose is attached to each other by 1,2 linkage, sorry 1,4 linkage. मतलब first carbon atom of one glucose molecule and fourth carbon atom of second glucose molecule. Now what is the molecular weight of amylose? Molecular weight कितना होगा? So amylose has a molecular weight around 60,000 Dalton. So 60,000 Dalton. इसका molecular कितना होता है? 60,000 Dalton. So amylose part of your starch is a water soluble. Amylose part क्या है? Water soluble होता है. And when you treat amylose with the iodine, so you will get a blue color. जब iodine के साथ में reaction होता है amylose का, आपको मिलता है blue color. Very very important. Okay. So what is amylose? Amylose is a totally 15 to 20% in the starch. It is an unbranched linear polymer of glucose. Around 250 to 300 glucose molecules will be there, which are linked via alpha 1,4 linkage. Molecular weight will be around 60,000 Dalton. It is a water soluble. It will give you blue color with the iodine solution. Okay. And second part होता है starch का amylopectin. Second part of starch is amylopectin. Now amylopectin is a 80 to 85%. 80 to 85% amylose. Okay, 80 to 85% amylopectin. So 10 to 15 to 20% क्या रहेगा? amylose रहेगा starch में, and 80 to 85% amylopectin रहेगा. Now amylopectin again it is a polymer of glucose, but it is a branched structure. It is not a linear structure. It is a branched structure. इसमें branching रहेगा. So again amylopectin is also water insoluble. Amylopectin is a water insoluble. Amylose क्या था? Amylose was a water soluble. Amylopectin part is a water insoluble. Okay. Now when anybody try to dissolve in the water, so amylopectin will swell in the water, and in the amylopectin, as I told you, it is a branch structure. Amylopectin क्या है? Branch है. मतलब जैसे है ना, अगर आपने amylose का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा लगेगा आपको, just a single line because unbranched linear. amylopectin का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा दिखेगा. amylopectin का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा. This is amylopectin, ये amylopectin, and this one is amylose. ना पहला वाला स्ट्रक्चर जो है वो एक लाइन amylose का है, दूसरा वाला स्ट्रक्चर किसका है भाई? amylopectin का है. Amylopectin. So amylopectin is a branch structure. So it is insoluble in the water. It will swell in the water. And main stem, मतलब जो main unit होता है, main polymer होता है, तो main stem of main stem or main branch of amylopectin has a alpha 1,4 glycosidic linkage. जो main mother branch होता है, mother branch or main branch of amylopectin. So this. So it is composed of alpha 1,4 linkage and branching point. At the branching point 146 है ना, branching point 16 linkage. मतलब क्या है ना? So this is a mother branch. Mother branch जो है that is a 1,4 alpha 1,4 glucose molecule के linkage है. So one molecule of glucose will be attached to another molecule of glucose via alpha 1,4 linkage in the mother branch. But ये जो branches है, जो साइड के branches है, now at the branching point you have alpha 1,6 linkage. At the branching point you have alpha 1,6 linkage. Is at the branching point glucose molecule will be attached to another glucose molecule via 1,6 bond. मतलब पहले ग्लूकोज का पहला कार्बन एटम, दूसरे ग्लूकोज का 6th कार्बन एटम एट अ ब्रांचिंग पॉइंट. बट जो मेन ब्रांच होता है, मदर ब्रांच होता है, वहाँ पे ग्लूकोज 1,4 है ना, वहाँ पे ग्लूकोज 1,4 मतलब क्या, मेन ब्रांच जो है, दिस इज अ मेन ब्रांच. तो है ना, जैसे यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है. ये सब ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैसे अटैच है? वाया 1,4 अल्फा 1,4 और 4 लिखे. बट मान लीजिए यहाँ से दूसरा ब्रांच निकला है, यहाँ से और एक ब्रांच निकला है, तो यहाँ पे जो लिंकेज होगा दैट इज अ 1,4 नहीं 1,6. ओके, सो एट द मदर ब्रांच यू हैव 1,4 लिंकेज, एट द ब्रांचिंग पॉइंट you have 1,6 linkage. Now what is the molecular weight of amylopectin?
The molecular weight of amylopectin is around 5 lakhs Dalton. Molecular weight of amylopectin is around 5 lakhs of Dalton. Now, है ना, amylopectin, when you treat with the amylopectin with the iodine, so you will get a reddish violet color. है ना, amylopectin क्या देगा, reddish violet color. So amylose कितना है, amylose is a 15 to 20% linear है, 1,4 linkage है, and it will give you blue color with the iodine, right? Blue color. Amylopectin कितना है, 80 to 85% amylopectin is there, and it is a branch chain. Okay, it is a branch structure, 1,4, and at a branching point 1,6 linkage is there. So molecular weight 5 lakh of Dalton, it will give reddish violet color with the iodine. Now, in the amylopectin, approximately 80 branches are there. In a amylopectin, approximately कितना branches होता है, 80 branches are there. Now each branch will have around 24 to 30 glucose molecule, है ना. मतलब ये जो मदर ब्रांच है, मदर ब्रांच ये मेन है, बट ये साइड ब्रांच है, साइड ब्रांच में कितना रहेगा, 24 to 30 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, राइट. एंड मोलिकुलर वेट किसका है, पूरे का कितना रहेगा, 5 lakhs. ठीक है. नाउ, राइट, सो स्टार्च इज अ होमोपोलिसेकेराइड which is a polymer of glucose. Okay, what is the polymer of glucose? Starch is a two component. First component is amylose and second component is amylopectin, right? So amylopectin कितना होता है, 85%. amylose कितना है, around 20%, right? Now starch can form a ester with the various acids. Starch can form a ester with the various organic acids. Now starch is insoluble in the cold water. Starch is insoluble in the cold water. अगर starch को आपने water में dissolve किया, starch is insoluble in the cold water. But if you heat the water, so viscosity of that solution will be increased. So starch in a solution, if you increase viscosity उस solution का बढ़ता है, viscosity is increased and there is a formation of gel. So gel formation takes place. Now, है ना? Now amylase is the enzyme. कौन सा enzyme है? Amylase. Amylase is the enzyme which will break down the starch into, है ना, which will break down the starch. मतलब amylase is the enzyme which will metabolize the starch. So amylase enzyme will break down the starch in the GIT. So amylase enzyme will break down the starch in the GIT. Now there are two type of amylase. पहला होता है alpha amylase and second होता है beta amylase. There are two type of amylase, alpha amylase and beta amylase. So what is amylase? Amylase is the enzyme which will break down this starch, है ना, in the GIT. आप जो रोटी खाते हो, आप जो चपाती खाते हो, आप जो राइस खाते हो, है ना, so whatever food you are taking, so most of that food has a starch. आप जो भी आलू खाते हो, आलू गोभी की सब्जी, जो भी रोटी खाते हो, so wheat, है ना, barley, jawari and rice, whatever that is, it is nothing but the starch. So starch is broken down in GIT. GIT में starch का breakdown होता है. कौन करता है आपके GIT में breakdown? Amylase. Amylase will break down the starch. There are two type of amylase. First one is alpha amylase and second one is beta amylase. So alpha amylase कहाँ पे होता है? Alpha amylase is found in the saliva and pancreatic juice. Alpha amylase is found in the saliva and pancreatic juice. So alpha amylase in the saliva and pancreatic juice. तो एक बार क्वेश्चन आया था, digestion of carbohydrates start in. So digestion of carbohydrates start in the mouth itself. Saliva कहाँ पे होता है? Saliva is present in the mouth. तो carbohydrate का digestion कहाँ से start होता है? Mouth से. Because in the saliva you have amylase and salivary amylase. It is known as salivary amylase. And there is another term known as a taline. P-T-Y-L-I-N. P-T-Y-L-I-N. Taline is the name of enzyme. Taline. What is taline? P-T-Y. P-T-Y. Taline is the name of salivary amylase. Okay, इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आ चुका है, वो अपन बाद में भी आएंगे. Then in a pancreatic juice also there is a there is a amylase. Now alpha amylase is present in the saliva and pancreatic juice. Beta amylase is present in the sprouted grains and malt. Beta amylase कहाँ पे होता है? Sprouted grains. मतलब जो है ना, sprouted grains मतलब क्या है? आप उसको बोलते हैं जैसे, है ना, अगर आपने मूंग रात को भिगो के रखे तो सुबह सुबह उसको स्प्राउटिंग आता है ना. तो स्प्राउटेड ग्रेन्स एंड माल्ट हैज अ बीटा amylase. Now both amylase will break down the starch at a alpha glycosidic linkage. Both amylase
will break down the starch from the alpha glycosidic linkage. तो देखो समरी क्या है भाई, starch is a homopolysaccharide composed of glucose. It has a two component, amylose and amylopectin. So amylose will give you blue color with iodine, amylopectin will give you reddish violet color with iodine. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, आ चुके हैं ऑलरेडी, राइट. अमाइलोज में कौन सा ब्रांचिंग होता है, अमाइलोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दे आर लिंक टुगेदर बाय 1,4 लिंकेज, एंड अमाइलोपेक्टिन में 1,4 भी होता है ना, मेन ब्रांच को, एंड साइड ब्रांच जो होता है ब्रांचिंग पॉइंट 1,6 होता है. तो इन द अमाइलोपेक्टिन यू हैव 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एज वेल एज 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. तो दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर अभी तक इफ यू समराइज द प्रीवियस ईयर पेपर, अभी तक इसमें तीन या चार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं. जस्ट अ सिंगल स्लाइड 3-4 क्वेश्चन आ चुके. नेक्स्ट पार्ट विल सी. नाउ नेक्स्ट वन इज अगेन एग्जांपल ऑफ polysaccharide. There is another example known as a glycogen. So it is an example of polysaccharide. What is a glycogen? Glycogen is a storage form of glucose in the body. Storage form of glucose in the animals. Glucose will be stored in the form of glycogen in the animals. So it is a storage form. So it is a storage form of glucose in the animals, and that's why sometimes it is called as animal starch. इसको क्या बोलते हैं, animal starch. Sometimes it is known as the animal starch because it is found in the animal. It is not found in the plant. Plant में storage form क्या है, cellulose. In the plant you have cellulose and starch, right? But in the animal, glucose can be stored partly in a glycogen. So glycogen is a dextrorotatory. It is a polymer of glucose. And okay, what is the importance of glycogen? First important is a glycogenesis. Glycogenesis मतलब क्या? Glycogenesis. There are two terms. Glycogenesis is what? Synthesis of glycogen. Glycogenesis मतलब क्या? Synthesis of glycogen. Genesis मतलब synthesis. So synthesis of glycogen is known as glycogenesis, and breakdown of glycogen is known as a glycogenolysis. Lysis मतलब क्या? Breakdown. So glycogen का breakdown, glycogenolysis, synthesis of glycogen, glycogenesis. Okay. Now these two terms are related with the glycogen. Okay. Now post-mortem glycogenolysis is very rapid and stops at a pH 5.5 due to accumulation of lactic acid. तो ये इसका टर्म का मैं आपको मीनिंग बोलता हूँ. Now what is the post-mortem glycogenolysis is very rapid and stops at a 5.5 pH due to accumulation of lactic acid. अभी अगर आप मर गए, वैसे आप नहीं मरना चाहिए, आपका दुनिया में रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ना. आपका डेस्टिनी क्या है किसको मालूम. आप कल को जाके प्रधानमंत्री बन सकते हो, आप कल को जाके कोई टीचर बन सकते हो, कल को जाके कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, कल को जाके कोई बहुत बड़ा सोशल वर्कर बनेगा जिसका सोसाइटी को हेल्प होगा. तो आपको जिंदा रहना जरूरी है. लेकिन मान लीजिए, मानने में क्या टैक्स लगता है क्या, अगर आप मर गए तो मरने के बाद में क्या बोलेंगे उसको, पोस्टमार्टम, है ना. मरने के बाद में क्या होता है, सभी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस स्टॉप हो जाते. सो योर ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस विल स्टॉप. सो व्हाटएवर ग्लाइकोजन इज देयर इन योर बॉडी, सो दैट विल बी ब्रोकन डाउन व्हेन यू डाई, दैट विल बी ब्रोकन डाउन. सो पोस्टमार्टम ग्लाइकोजेनोलाइसिस is very rapid, मतलब breakdown of glycogen is rapid and will stop at a pH 5.5 due to accumulation of lactic acid. अभी lactic acid accumulate कैसे होगा, जब आप मर जाओगे तो आप सांस नहीं ले पाओगे, सांस नहीं लेंगे तो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा. सो पोस्टमार्टम ग्लाइकोजेनोलाइसिस is rapid and when pH of your body pH will become 5.5, so it will stop automatically, right? Now what is the molecular weight of glycogen? So molecular weight of glycogen is around 10 lakh to 40 lakhs kilton. Molecular weight of glycogen 10 to 40 lakhs kilton. It is a not soluble in the water. Water soluble nahi hai, insoluble in the water. Okay. It is a polymer of D-glucose. It is a polymer of D-glucose. So glycogen is a polymer of D-glucose. So bond कौन सा है इसमें, 1,4. So main mother branch, it is a 1,4 linkage, means first carbon atom of glucose, one molecule, पहला glucose molecule का first carbon atom will form a bond with the fourth carbon atom of another glucose molecule. So that's why D-glucose plus D-glucose will be bounded via 1,4 glycosidic bond,
and at the branching again 1/6 as that of the starch, जैसे starch के जैसे, ठीक है. But starch is a very लेंदी पॉलीमर, स्टार्च बहुत ही लेंदी पॉलीमर है. ग्लाइकोजन इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, याद रखना है, ग्लाइकोजन इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इट इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. तो ग्लाइकोजन जो है ना आपके लीवर में स्टोर होता है, इट इज स्टोर्ड इन द लीवर एंड मसल्स. ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन द लीवर एंड मसल्स, एंड इफ देयर इज अ defect in the storage of glycogen in the liver and muscle known as a glycogen storage disease. We are going to see it later on, don't worry. नेक्स्ट होता है इनुलिन. क्या है? इनुलिन. कौन सा लिन भाई? इनुलिन. नेक्स्ट पार्ट इज इनुलिन. व्हाट इज इनुलिन? अगेन इट इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज. देखो अभी स्टार्च क्या है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. सेलुलोज क्या है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. ग्लाइकोजन क्या है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. इनुलिन क्या है? पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज. तो इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज. रिमेंबर, इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज. मॉलिक्यूलर वेट कितना है इनुलिन का? सो इनुलिन का मॉलिक्यूलर वेट 5000 Dalton. Polymer of fructose known as inulin and molecular weight is 5000 Dalton. It is found in the tubers of दलिया plant. Tubers of दलिया plant. दलिया नाम का प्लांट होता है, मुझे भी नहीं मालूम. Tubers of दलिया plant and roots of Jerusalem antichoke plant. Roots of Jerusalem antichoke plant also found in the bulbs of onion and garlic. है ना? तो मतलब इनुलिन गार्लिक में पाया जाता है, इनुलिन ओनियन में पाया जाता है, जेरूसलम प्लांट में पाया जाता है, दलिया प्लांट में पाया जाता है. तो इट इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज. रिमेंबर वन मोर थिंग, so this inulin is used to measure, inulin is used to measure GFR. क्या है? GFR. inulin is used to measure the GFR. GFR मतलब क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, है ना. Inulin is used to measure the GFR, glomerular filtration rate. Now also there is one more chemical known as a creatinine. Creatinine is also used to measure the GFR. Creatinine and inulin, these are the two molecules which are used to measure the GFR. GFR मतलब क्या? glomerular filtration rate. तो एक मिनट में ग्लोमेरुलर से है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मतलब क्या? तो अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड थ्रू ग्लोमेरुलस पर यूनिट टाइम नोन एज अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ठीक है, ये एडिशनल नॉलेज है ना. नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड इज अ म्यूकोपॉलीसेकेराइड. अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. बिफोर दैट यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ योर स्टार्च. स्टार्च का स्ट्रक्चर कैसा है देखो. दिस वन इज नोन एज अ मदर ब्रांच. ये क्या है? दिस वन इज अ मदर ब्रांच. पहला वाला क्या है? ये सब डॉट डॉट क्या है? डॉट डॉट मीन्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल. So the mother branch will have alpha 1,4 linkage. Alpha 1,4 linkage means one molecule of glucose है ना, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल प्लस ग्लूकोज का दूसरा मॉलिक्यूल, they are linked together by 1,4 linkage. One है ना, first molecule of glucose 1 and fourth molecule of glucose 4, second group, they are joined together. That's why है ना 1,4 linkage. So mother branch is a 1,4 linkage, and at the branching point, जो branching है, at that point there is a 1,6 linkage, alpha 1,6 linkage. Now polysaccharide, they are repeating monomer of monosaccharide. Polysaccharide में भी इधर है ना homopolysaccharide. एग्जाम्पल देख लो, homopolysaccharide. homopolysaccharide का एग्जाम्पल क्या है? स्टार्च है, then inulin है, then dextrin है, glycogen है. So all they are the polymer of your glucose. So that's why homopolysaccharide. I hope I am audible to you and you are getting my points. अगर आपको समझ में आ रहा है तो यस लिखिए कमेंट बॉक्स में. I hope I am audible. आरती, योगिता, वैष्णवी, आकांक्षा, ये कौन है? अनलिमिटेड जीबी. काही पण नाव ठेवते, अनलिमिटेड जीबी है ना, घरचीच कंपनी वाटतं. Then heteropolysaccharide. In that heteropolysaccharide, फर्स्ट वन इज अ म्यूकोपॉलीसेकेराइड. हेट्रोपॉलीसेकेराइड में पहला है आपका म्यूकोपॉलीसेकेराइड. हेट्रोपॉलीसेकेराइड में हेट्रो मतलब क्या है? अलग अलग, है ना. होमोपॉलीसेकेराइड मतलब क्या है? सो रिपीटिंग मोनोमर ऑफ सेम मोनोसेकेराइड. होमोपॉलीसेकेराइड मींस रिपीटिंग मोनोमर ऑफ सेम पॉलीसेकेराइड. जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्च में क्या है? ग्लूकोज का पॉलीसेकेराइड. इनुलिन क्या है? फ्रुक्टोज का पॉलीसेकेराइड. डेक्स्ट्रिन क्या है? ग्लूकोज.
Glycogen is a polysaccharide of glucose. Heteropolysaccharide, in that you have two different monosaccharides. तो पहला है इसमें एग्जांपल म्यूकोपोलिसैकेराइड. फर्स्ट इज म्यूकोपोलिसैकेराइड. इन द म्यूकोपोलिसैकेराइड यू हैव रिपीटिंग मोनोमर ऑफ, है ना, यू हैव रिपीटिंग मोनोमर ऑफ अमाइनो शुगर. इसमें अमाइनो शुगर है. म्यूकोपोलिसैकेराइड्स आर आल्सो नोन एज अ ग्लाइकोस अमाइनोग्लाइकन. Mucopolysaccharides are also known as the glycosaminoglycan or GAG, glycosaminoglycan. They are the carbohydrate containing यूरोनिक एसिड एंड अमाइनो शुगर. इसमें क्या है कि हेटेरोपोलिसैकेराइड में क्या आता है, हेटेरोपोलिसैकेराइड है ना, इन दैट यू हैव फर्स्ट म्यूकोपोलिसैकेराइड. इन द म्यूकोपोलिसैकेराइड में क्या होता है, रिपीटिंग है ना, रिपीटिंग मोनोमर्स ऑफ यूरोनिक एसिड एंड अमाइनो शुगर. यूरोनिक एसिड क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ योर ग्लूकोज. So in the mucopolysaccharide, so what is there, uronic acid and amino sugar. Okay, uronic acid and amino sugar, they are present in the connective tissue. Mucopolysaccharide कहाँ पे मिलता है, they are present in the connective tissue like tendons, synovial fluid, then vitreous humor. Tendons में पाया जाता है synovial fluid and vitreous humor. Vitreous humor कहाँ पे होता है, there are two type of fluid in the eyes, aqueous humor and vitreous humor. Okay. So these mucopolysaccharides are found in the tendons, joints, synovial fluid and vitreous humor, right? Vitreous humor. There are different type of mucopolysaccharide. इसमें एग्जांपल क्या है अपन देखेंगे. आपका एक, आप तो लगाते हो डेली म्यूकोपोलिसैकेराइड, आप लगाते होंगे ना अंदर किया. फर्स्ट वन इज अ हाइयालुरोनिक एसिड. फर्स्ट वन इज नथिंग बट द हाइयालुरोनिक एसिड. देखो डॉक्टर ऐश्वर्या राय जो स्किन स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर ऐश्वर्या राय कौन है, स्किन स्पेशलिस्ट, मतलब MBBS MD इन द स्किन केयर प्रोडक्ट. ऐश्वर्या राय, डॉक्टर ऐश्वर्या राय बच्चन हैज डन MD इन द स्किन केयर प्रोडक्ट एंड देन फ्रॉम हियर आई डोंट नो, फ्रॉम हार्वर्ड और है ना, फॉरेन से किया है आई थिंक उन्होंने. तो वो टीवी पे आते हैं ना, तो आपको बोलते हैं ना लैक्मे फाउंडेशन क्रीम, आपको आता है लेकिन लैक्मे फाउंडेशन क्रीम, इसमें हाइयालुरोनिक एसिड, क्या बोलते हैं, हाइयालुरोनिक एसिड. इसमें हाइयालुरोनिक एसिड जो आपकी स्किन को बना देगा गोरा, है ना. तो उनको बोलना, डॉक्टर ऐश्वर्या राय आप साउथ अफ्रीका में जाइए, तो वहाँ के जो काले लोग हैं, वहाँ पे जो काली लड़कियाँ हैं, उनको ये हाइयालुरोनिक एसिड का ट्रीटमेंट दीजिए और उनको वाइट बना दीजिए, क्योंकि उनको भी सुंदर दिखना है. सुंदरता कलर पे नहीं होती, सुंदरता मन से होती है. हाइयालुरोनिक एसिड, इट इज अ काइंड ऑफ म्यूकोपोलिसैकेराइड. हाइयालुरोनिक एसिड इज अ काइंड ऑफ म्यूकोपोलिसैकेराइड. इट इज अ कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग मोनोमर ऑफ N-acetyl ग्लूकोसामाइन. ये ग्लूकोसामाइन क्या है, इट इज अ अमाइनो शुगर. वी हैव सीन, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर वी हैव सीन, है ना, अमाइनो शुगर. So hyaluronic acid is composed of a repeating monomer of N-acetyl glucosamine that is linked via beta-1,4 glucouric acid, beta-1,4 glucouric acid and beta-1,3 N-acetyl glucosamine. So it is a repeating monomer of N-acetyl glucosamine, beta-1,4 glucouric acid, beta-1,3 N-acetyl glucosamine. तो इसका रिपीटिंग यूनिमर जो है, रिपीटिंग मोनोमर जो है, उसको अपन बोलेंगे हाइयालुरोनिक एसिड, है ना. आदित्य राव हैदरी एंड ऐश्वर्या राय, ये दोनों साथ मिलके एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं. कौन सा, है ना, कि लैक्मे फाउंडेशन क्रीम, इसमें 1/4 हाइयालुरोनिक एसिड जो आपकी स्किन को बना देगा ग्लो, ऐसा कुछ है उनका. ठीक है, मतलब आजकल नए नए डॉक्टर्स आते हैं, जैसे ऐश्वर्या राय, जैसे अक्षय कुमार, डॉक्टर अक्षय कुमार, है ना, बहुत सारे, मतलब डॉक्टर्स आजकल बहुत सारे है ना. उनका क्लिनिक कहाँ पे वो मालूम नहीं, जाना है एक दिन. नेक्स्ट आता है आपका हिपेरिन. सो हिपेरिन इज आल्सो अ काइंड ऑफ म्यूकोपोलिसैकेराइड. देखो क्वेश्चन आ चुका है, हिपेरिन तो अपन ने देखा है, वी हैव ऑलरेडी सीन अबाउट द हिपेरिन. हिपेरिन इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट. वी हैव ऑलरेडी सीन अबाउट द हिपेरिन. हिपेरिन इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट. So what is the nature of heparin? So heparin is not a protein. Heparin is a mucopolysaccharide. Heparin क्या है? It is a type of mucopolysaccharide. Heparin is also a mucopolysaccharide. So it consists of repeating monomers of sulfated glucosamine. ये क्या है? Sulfated.
सल्फेटेड ग्लूकोसामाइन, इसमें देखा ना आपने बोला है, सो वी ऑलरेडी सीन. सो इन केस ऑफ heparin, so amino sugar is esterified with the sulfuric acid. That's why heparin is a most acidic organic acid in the body, most acidic compound. So sulfated glycosamine, sulfated glucosamine, yeah, that is linked with the so what is the linkage? It consists of repeating units of sulfated glucosamine. So alpha 1,4 iduronic acid, alpha 1,4 L-iduronic acid, sulfated unit of glucosamine, sulfated unit of glucosamine linked with the L-iduronic acid. तो heparin में क्या है भाई कि sulfated glucosamine is binded with the 1,4 L-iduronic acid and this is repeated again. So that is a heparin. Heparin is a mucopolysaccharide, right? So hyaluronic acid, heparin, then next आता है chondroitin sulfate. Chondroitin sulfate. Chondroitin sulfate is also a type of mucopolysaccharide. Chondroitin sulfate भी क्या है? It is a mucopolysaccharide. Now it is composed of repeating monomers of glucouronic acid, which is linked with the beta 1,4 3N-acetyl galactosamine sulfate. So glucouronic acid, which is linked with the beta 1 3N-acetyl galactosamine sulfate, which is linked to a beta 1,4 and so on. मतलब ये repeating monomer रहेगा उसका. तो glucuronic acid linked with the galactosamine sulfate, N-acetyl galactosamine sulfate. तो chondroitin sulfate. So it is found in the bones. Mostly कहाँ पे? Bones, cartilage, tendons. इसमें ये chondroitin sulfate आता है. तो hyaluronic acid, heparin, chondroitin sulfate, they are the examples of mucopolysaccharide. क्वेश्चन आपको आ सकता है. और एक एग्जांपल है आपका, एग्जांपल नंबर 4, known as a keratin sulfate, known as a keratin sulfate. So it is only GAG, it is only GAG. GAG मतलब क्या होता है कि glycosamine glycan which does not contain any uronic acid. Normally mucopolysaccharide क्या आता है कि glycosamine glycan linked with the uronic acid, but ये क्या है? only glycosamine glycan है. The repeating monomers are galactose and N-acetyl glucosamine in a beta linkage. You can see the structure of heparin over here. कि अपन ने जो एंटीकोलन देखा है उसमें हेपेरिन का स्ट्रक्चर नहीं देखा था, तो बिकॉज हेपेरिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे ना, वहाँ पे कैसे देखेंगे? तो सल्फेटेड ग्लाइकोसामाइन अल्फा 1,4 आयोडोयूरोनिक एसिड, iduronic acid, not iodo, iduronic acid, sulfated glucosamine alpha 1,4 iduronic acid, which is a repeating monomers found in the heparin. तो heparin में क्या है? देखो ये पहला क्या है? it is a structure of glucose. ये ग्लूकोज है और यहाँ पे क्या लगा है? यहाँ पे क्या लगा है? यहाँ पे NH लगा है, मतलब ग्लूकोसामाइन है ना, और उसका ईस्टर है सल्फेट का. तो सल्फेटेड ग्लूकोसामाइन, सल्फेटेड ग्लूकोसामाइन, नाउ अल्फा 1,4, ये 1 है ना, ये 4 कार्बन, 1,4 लिंकेज, 1,4 iduronic एसिड, इसको बोलेंगे अपन iduronic एसिड, iduronic एसिड. So sulfated glucosamine 1,4 iduronic acid, that is the structure of heparin, which is a mucopolysaccharide basically. heparin क्या है भाई? mucopolysaccharide है ना. कौन सा polysaccharide? mucopolysaccharide. मैं तो बहुत सारे बच्चे ना, heparin क्या है मैंने पूछा ना, what is the chemical nature of heparin, तो ऑप्शन में दे दिया. ऑप्शन में मैं देता हूँ, what is the chemical nature of heparin? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी mucopolysaccharide. So well, most of the students they used to answer like a protein, but heparin is a mucopolysaccharide. Heparin क्या है? It is a mucopolysaccharide. It is the most acidic compound in the body because it consists of a glycosamine amino sugar sulfated with the sulfuric acid. That's why. Now second example है mucopolysaccharide का, यहाँ पे देखो, that is a D-glucouric acid 1,4, D-glucouric acid beta 1,3 DN-acetyl glucosamine. So it is nothing but the chondroitin sulfate. तो यहाँ पे chondroitin sulfate में क्या है? देखो, repeating monomers of glucouric acid which is linked with the 3N-acetyl galactosamine sulfate. तो देखो galactosamine sulfate, ये क्या है? galactosamine है. ये क्या है? यूरोनिक एसिड.
ग्लूकोयूरिक एसिड। देखो ग्लूकोज का 6 कार्बन एटम जो है वो एसिड बनाए, व्हेन देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड 6 कार्बन एटम का है ना, व्हेन देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ टर्मिनल अल्कोहल ग्लूकोयूरिक एसिड बनेगा। तो ग्लूकोयूरिक एसिड बीटा 1,1,3 NST को यहाँ कहाँ पे NST, ये NST galactosamine, that is a chondroitin sulfate, example of your mucopolysaccharide. So I hope you have understood mucopolysaccharides, ठीक है। mucopolysaccharid आपको समझ में आया। अगर कोई नया है तो पिछले वाले लेक्चर्स पूरे देख लो। If anybody is new here, so they can go and watch all the previous lectures I have taken for carbohydrate. Now, right, so if you have starch will be broken down into maltose or dextrins. Starch will be broken down into maltose or dextrin by the enzyme amylase. There are two types, alpha and beta. Then maltose will be broken down by maltase enzyme into glucose. So starch is a polymer of glucose. Starch is a polymer of glucose. तो स्टार्च किसका पॉलीमर है भाई? आपका है, मेरा है, या फिर और किसी का है? स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, रिमेंबर। Okay, so starch will be broken down by the amylase enzyme amylase enzyme will break down the starch into maltose and dextrins, and then maltose will be converted into glucose by the enzyme maltase. Now starch again on hydrolysis will give you glucose. So how there is a hydrolysis of starch? You can say course of hydrolysis of starch. पहले क्या है? starch. When you starch when treated with the iodine, you will get a blue color. तो आयोडीन के साथ में स्टार्च क्या रहता है? ब्लू कलर का है। इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। स्टार्च व्हेन ट्रीटेड विद द आयोडीन, आयोडीन के साथ में ब्लू कलर। ओके, नाउ स्टार्च अपॉन हाइड्रोलिसिस, स्टार्च इज इनसोल्युबल इन द वाटर। ये क्या है? इनसोल्युबल है, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस देयर इज अ solubility. Okay, so soluble starch, also this soluble starch will also give you blue color with the iodine. बाद में और हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा? अमाइलोडेक्स्ट्रिन will give you purple color. कौन सा कलर? पर्पल कलर। नाउ erythrodexitin after amyloidextrin further hydrolysis will give you erythrodexitin, which will give you red color, है ना। erythrodexitin further hydrolysis will give you acrodextrin, which is a colorless, it will give you no color with iodine. Lastly you will get a maltose. That's how starch is hydrolyzed in the body. स्टार्च का हाइड्रोलिसिस ऐसे होता है बॉडी में, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस ऐसा होता है, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस और एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड का हाइड्रोलिसिस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज नथिंग बट द, अगेन यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है डाइसेक्राइड के। सो इट इज स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। तो ग्लूकोज कंपोनेंट and fructose component. So glucose is linked to a fructose via 1,2 linkage. So sucrose is a non-reducing sugar. Sucrose क्या है? Non-reducing sugar. Sucrose is a non-reducing. क्यों है? Because first carbon atom on which there is aldehyde group of glucose that is engaged in the bond, and second carbon atom on which there is a ketone group of fructose that is engaged. So no free aldehyde or no free ketone group. That's why it is a non-reducing sugar. So linkage देखो alpha D glucosyl beta D fructose 1,2 beta fructose. Then बाद में आता है आपका maltose. So this is a example or this is a structure of maltose. So glucose 1,4 glucose 1,4. So this is one molecule of glucose and second molecule of glucose linked via 1,4 glycosidic bond, right? तो देखो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ दिस ग्लूकोज which is aldehyde functional group that is engaged, but first carbon atom of another glucose molecule which is having aldehyde group which is a free, so that's why it is a reducing sugar. That's why it is a reducing sugar. तो देखो ये reducing है। अगेन यहाँ पे it is a structure of galactose. It is a structure of galactose. तो ग्लूकोज एंड galactose compartment or galactose component, glucose component. Galactose is linked via glucose via 1,4 glycosidic bond.
first carbon atom of galactose is linked with the fourth carbon atom of glucose, है ना। तो यहाँ पे गैलेक्टोज का जो अल्डिहाइड ग्रुप है वो एंगेज्ड है, बट यहाँ पे जो अल्डिहाइड ग्रुप है किसका, ग्लूकोज का, वो फ्री है। दैट्स व्हाई इट इज अगेन ए रिड्यूसिंग शुगर। सो रिड्यूसिंग शुगर मतलब क्या है, इफ ए शुगर हैज अ फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, if a sugar has a free aldehyde or ketone group known as a reducing sugar. So Benedict test and Barford test, they are the test to check the reducing sugar or non-reducing sugar. We have seen. Now next part, अगर यहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट चैप्टर खत्म होता है, but next part is a metabolism of carbohydrate. Next part is a metabolism of carbohydrate. Now whatever you are eating, आप जो भी खाना खा रहे हो दबा के, दो तीन टाइम जो है ना दबा के खाना खाते हो आप, खाना कार करते बाहर, तो आप जो खाना खा रहे हो इन दैट यू आर गोइंग टू गेट अ ग्लूकोज। सो वट एवर फूड यू आर टेकिंग, so that will be digested, that will be converted into glucose. So glucose will be absorbed from intestine and that will be sent to your blood. So glucose in the circulation. Now what are the fate of glucose? क्या है fate of glucose? What are the fate of glucose? है ना, ग्लूकोज का क्या होगा, जैसे YouTube वाले देखो अब क्या होगा, है ना, अब क्या होगा, तो उस तरीके से ग्लूकोज का क्या होगा, what will happen with the glucose, what is the fate of glucose? So glucose in a blood circulation, आपके ब्लड में ग्लूकोज आ गया, खाना खाया आपने, खाना डाइजेस्ट हो गया, है ना, सो पॉलीसैकेराइड खाया, स्टार्च खाया आपने, सो दैट इज डाइजेस्टेड इन द जीआईटी यूजिंग एंजाइम्स। नाउ इट इज ब्रोकन डाउन इनटू maltodextrins and lastly glucose. Now glucose will be absorbed, that will be in a blood. So what is the fate? जब शुगर आपके ब्लड में है तो उसका क्या क्या हो सकता है भाई, सो ग्लूकोज इन द ब्लड दैट विल बी ऑक्सीडाइज्ड, glucose in the blood that will be oxidized. So glucose in the blood will be oxidized. Oxidized for what? Glucose in the blood will be oxidized for what? To get energy. ना आपको ग्लूकोज बॉडी में ऑक्सीडाइज होता है इसके लिए, एनर्जी के लिए. ग्लूकोज इन द बॉडी विल बी ऑक्सीडाइज्ड फॉर एनर्जी. सो व्हाट आर द पाथवेज फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज? ग्लाइकोलिसिस है आपके पास, EM पाथवे, देन HMP शंट है, मोनोफॉस्फेट शंट, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, देन यूरिक एसिड पाथवे है, यूरिक एसिड पाथवे है, देन यू हैव क्रेब साइकिल, TC साइकिल. तो आपकी बॉडी जो है खाना डाइजेस्ट कर लेती है, so whatever food you are taking, so that food is digested, finally glucose is released in the blood. So glucose in the blood, first it will be oxidized via various oxidative pathways, then जो बचा कुचा है, okay, so that can be converted into storage form, that can be converted into storage form. What is the storage form? Glycogen. So glycogenesis will be there, glycogenesis. तो रिमेनिंग है ना, आपने क्या किया कि इतना खाते हो आप, मतलब है ना, आपको कभी मिला नहीं खाना, ऐसा इतना खाना खाते हो आप, मतलब कल मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, इसलिए आज ही खा लेते हो उसको, कल मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, तो इसलिए सभी खाना मैं आज ही खा लूंगा. बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है आपके ब्लड में, तो जितना आपके लिए एनर्जी लगता है बॉडी के लिए, तो सम पार्ट ऑफ ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड, इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू गेट द एनर्जी. ओके, अभी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, सो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टोरेज फॉर्म, दैट इज अ ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजेनेसिस. स्टिल ग्लाइकोजेनेसिस हो गया, लेकिन यू हैव लिमिटेड स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन. यहाँ पे बॉडी में बहुत सारा ग्लाइकोजन स्टोर नहीं कर सकते. योर बॉडी हैज अ लेस कैपेसिटी. ओके, सो इन योर मसल एंड इन योर liver around 20 to 40 grams of glycogen that can be stored, and in your muscle around 250 grams of glycogen can be stored. So you have limited capacity. तो लिमिटेड कैपेसिटी है आपका, ग्लाइकोजन भी बहुत सारा स्टोर नहीं कर सकते आप. तो आपने खाना इतना खाया है कि और भी शुगर है आपके बॉडी में. सो व्हाट विल हैपन? सो दैट एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू लिपिड्स. एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू लिपिड्स. कन्वर्जन इनटू लिपिड्स इज अ लिपोजेनेसिस.
दैट्स वाई जो ज़्यादा खाना खाता है उसका एमआरएफ का टायर उतना ही बड़ा होता है। तो जो ज़्यादा खाना खाता है उसके पेट में जो एमआरएफ का टायर बनता है वो उतना ही बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा खा रहे हो ना आप, ज़्यादा स्टार्च खा रहे हो, ज़्यादा ग्लूकोज है आपके बॉडी में, जितना आपके बॉडी के लिए एनर्जी लगता है उतना ऑक्सीडाइज होगा, जितना बाकी जो बचा है कुछ अमाउंट का ग्लाइकोजन बनेगा। लेकिन खा ही इतना लिया है तो वो क्या करेगा, वो तो बॉडी क्या करेंगे, दैट ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू लिपिड्स। So conversion of glucose into lipids or fat, that is lipogenesis. Then है ना, still है ना, some part of glucose okay will be converted into amino acids, converted into amino acids. आप बोलेंगे सर ये अमीनो एसिड तो आपको खाने में से ना, आप बोलेंगे सर डाइट में से अमीनो एसिड मिलता है खाने के लिए, तो यहाँ से अमीनो एसिड बनाने की जरूरत क्या है? तो फ्रॉम द डाइट यू आर गोइंग टू गेट पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स, बट इन द बॉडी some intermediate amino acids are required, some amino acids are which are not supplied in the diet, that is made, so converted into amino acids, and then again glucose will be converted into another carbohydrate. जैसे फॉर एग्जांपल पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर में कन्वर्ट होगा, या फिर गैलेक्टोज बनेगा, या फिर फ्रुक्टोज बनेगा, या फिर मैनोज बनेगा। सो व्हाट इज द है ना, व्हाट इज द फेट ऑफ ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज का क्या होगा, ये अपने महाराज से पूछना पड़ेगा। जो महाराज आते हैं ना, जंगली रंग में पे आओ ना महाराज, तो महाराज से पूछना पड़ेगा ग्लूकोज का क्या होता है। ग्लूकोज का क्या होता है भाई, बॉडी में ग्लूकोज है तो कुछ पार्ट ग्लूकोज का मेटाबोलाइज होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। कुछ पार्ट जो है ग्लूकोज का, एनर्जी आपके बॉडी के लिए जितना लगता है उतना एनर्जी मिलेगा। दूसरा क्या होगा, सो ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एज अ स्टोरेज, देन glucose will be converted into lipids, glucose will be converted into amino acids, glucose will be converted into another carbohydrates. So this is the fate of glucose. ये क्या है, फेट है ग्लूकोज का, ग्लूकोज के नसीब में। आप बोलते हो ना गाना, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में है कि नहीं, तो वैसे ग्लूकोज के नसीब में क्या है ना, मेरे नसीब में तो है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं, वो तो अपने को पता नहीं और उसमें पढ़ना भी नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज के नसीब में क्या है। ग्लूकोज के नसीब में क्या है भाई, कि ग्लूकोज के नसीब में एक तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, एनर्जी मिलेगा बॉडी को, या फिर जो बचा है एक्स्ट्रा तो उसका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, या फिर उससे भी बचा है और तो उसका लिपिड कन्वर्जन होगा, या फिर कुछ अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा, या फिर कुछ बाकी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा। I hope you are getting. If I am audible to you, please write yes in the comment box. If I am audible to you, please write yes in the comment box. If I am audible to you, please write yes in the comment box. If I am audible to you, please write yes in the comment box. I hope I am audible to you and you are getting my points. And you are getting my points. Next part is a next part. So there are some factors which increases the blood glucose level, there are some factors which decreases the blood glucose level. ना, there are some factors which increases the blood glucose level. तो आपके ब्लड में ग्लूकोज कहाँ से आएगा, तो इन द ब्लड you will get glucose from, so in the blood you will get glucose from. What are the sources of glucose? What are the sources of blood glucose? तो ब्लड में ग्लूकोज कहाँ से आएगा, तो there are also hyperglycemic factors. तो कहाँ से आएगा, so whatever food you have taken, so absorption of glucose from GIT, so starch is converted into glucose, then so that will increase the blood glucose level. Again glucose कहाँ से आ सकता है, तो glycogenolysis, breakdown of glycogen in the liver, so breakdown of glycogen in the liver, that will increase the glucose. थर्ड क्या है, gluconeogenesis, synthesis of glucose from non carbohydrate precursor like lipids and amino acids. मतलब ये ग्लूकोज ब्लड में कहाँ से आता है, एक तो खाना खा लिया आपने, वहां से ग्लूकोज आएगा, या फिर आपके लीवर में जो ग्लाइकोजन है वो ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज आएगा, या फिर ब्लड में कहाँ आ सकता है, और एक बार तो नया ग्लूकोज बन सकता है बॉडी में। अगर आपने ग्लूकोज खाना ही बंद किया, मतलब वही ना, सो इफ यू स्टॉप द ईटिंग शुगर, है ना, जैसे होता है ना
कि आजकल कटरीना कैफ, डॉक्टर कटरीना कैफ है ना, डॉक्टर कटरीना कैफ एमडी न्यूट्रिशनोलॉजिस्ट, डॉक्टर कटरीना कैफ, शी हैज डन हर है ना मास्टर ऑफ डॉक्टर इन द है ना मेडिसिन ऑफ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, शी इज अ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन द न्यूट्रिशन है ना, डॉक्टर कटरीना कैफ है ना, नए डॉक्टर आ चुकी है अपने, बहुत ही सुंदर ऐसी डॉक्टर है। वो आपको बोलती है ना इसमें है कैलोरीज, इसमें है शुगर है ना, ये नहीं खाओ, वो क्या खाओ, खाओ फिर स्टीविया एक्सट्रैक्ट, शुगर फ्री बोलते हैं, शुगर फ्री, शुगर फ्री में होता है स्टीविया एक्सट्रैक्ट। ओके, स्टीविया एक्सट्रैक्ट इज अराउंड 5000 times sweeter than sucrose, that's why, but stevia extract is not a glycogenic source, it will not give you glucose। तो ग्लाइकोजन सॉरी, तो ग्लूकोज कहाँ से आएगा, आप जो खाना खाते हो वहां से आएगा, राइट, दैट इज अ ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इन द जीआईटी। देन अगर वहां से नहीं आया, खाना ही बंद किया आपने, तो ग्लूकोज कहाँ पे, ग्लूकोज तो लगता है बॉडी को, बिकॉज विदाउट ग्लूकोज यू विल नॉट सर्वाइव। तो सो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा लिवर में, वो ग्लूकोज बनेगा, या फिर अगर ग्लाइकोजन भी नहीं है आपकी बॉडी में, खत्म हो गया ग्लाइकोजन, तो यहाँ पे याद रखो। सो सोर्स क्या है, स्टार्च, वट एवर स्टार्च यू आर ईटिंग दैट विल बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। इफ यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग, यू आर अंडर स्टार्वेशन, सो लिवर ग्लाइकोजन विल बी broken down and that is converted to glucose, so your blood will use glucose। now if glycogen is limited in your body, as I told you, यहाँ पे लिमिटेड होता है ग्लाइकोजन, अगर वो खत्म हो गए तो फिर so your lipids and proteins are broken down and that is converted into glucose, that is gluconeogenesis। so synthesis of glucose from non-carbohydrate because that's how you will get a glucose in the body। अभी ग्लूकोज बॉडी में बढ़ाने के लिए कौन काम आता है, those factors which increases the blood glucose level, those factors which increases the blood glucose level, जो भी फैक्टर ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ाते हैं उनको बोलेंगे अपन हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर्स, हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर। एंड द हार्मोन्स व्हिच इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल नोन एज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। कौन से है भाई, देखो ग्लूकेगॉन इंपॉर्टेंट है, सो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन ग्लूकेगॉन, देन एड्रेनालिन, देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, देन ग्रोथ हार्मोन एंड थायरोक्सिन। So these are the hormones which increases the blood sugar level, right? So these are the hormones which increases the blood sugar level: glucagon, adrenaline, corticosteroids, growth hormone and thyroxine। So basically they will promote these things, they will promote more absorption of glucose in the GIT, they will promote the glycogenolysis, they will promote the ग्लूकोनियोजेनेसिस, दे विल है ना, दे विल स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ये हार्मोन ये करेंगे, ठीक है। ग्लूकेगॉन का काम क्या होता है, ग्लूकेगॉन का काम होता है टू ब्रेक डाउन द ग्लाइकोजन, राइट। देन नाउ नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है ऑन एन एवरेज, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल ऑफ ए नॉर्मल पेशेंट, सो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, अगर आपने खाना नहीं खाया है ना, आप खाली पेट हो, सो दैट इज अ फास्टिंग। तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इज अराउंड 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। 70 से 110 मिलीग्राम पर लीटर पर डेसीलीटर ब्लड में शुगर होना चाहिए फास्टिंग। पोस्ट पेरेंडियल कितना होना चाहिए, खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद में। सो पोस्ट पेरेंडियल इट इज लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, खाना खाने के बाद में कितना होना चाहिए, 140 से कम होना चाहिए, तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। These are known as a hyperglycemic hormones or hyperglycemic factor. Basically, they will increase the blood glucose level. Basically, it will increase the blood glucose level. Now, some are the hypoglycemic factors. Some are the hypoglycemic factors. ये क्या करेंगे? They will decrease the blood sugar level. They will decrease the blood sugar level. So, example क्या है? Insulin. तो hypoglycemic हार्मोन कौन है? Insulin. ठीक है। दूसरा एक होता है सोमेटोस्टैटिन। इंसुलिन इज अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, ये क्या करेगा, ब्लड का शुगर लेवल कम करेगा, एंड सोमेटोस्टैटिन इज अगेन हार्मोन व्हिच विल डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। नाउ हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर कौन है,
So factors removing the glucose from the blood, factors which will remove the glucose from the blood, है ना. So example is nothing but the glycolysis in the cell, utilization of glucose in the glycolysis. Glycolysis हो गया तो blood sugar level कम हो जाए. TCA in the most of the TCA cycle in the most of the cell. Then glucose to carbon dioxide and water. Glucose is converted into carbon dioxide and water by metabolism. Then glycogen synthesis. So synthesis of glycogen will decrease the blood sugar level. Then lipogenesis, synthesis of lipid will decrease the blood sugar level. मतलब क्या बाबा, ये फैक्टर्स जो है वो ब्लड शुगर लेवल बढ़ाते हैं. ये फैक्टर्स क्या करते हैं? कम करते हैं. ये जो हार्मोन्स है ब्लड शुगर लेवल बढ़ाते हैं, ये जो हार्मोन है वो कम करते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दिस, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डायबिटीज चैप्टर. ये समझना चाहिए आपको. अगर ये समझ में आया, डायबिटीज समझ में आया. अगेन यू कैन सी व्हाट इज द फेट ऑफ ग्लूकोज, है ना. ग्लूकोज के साथ में क्या होगा भाई? ग्लूकोज का क्या होगा? ग्लूकोज का हो सकता है ऑक्सीडेशन फॉर द एनर्जी. आपके बॉडी के लिए क्या लगता है? एनर्जी लगता है ना. तो बॉडी नीड्स एनर्जी, तो ग्लूकोज विल बी ऑक्सीडाइज्ड. ग्लूकोज विल बी ऑक्सीडाइज्ड वाया ग्लाइकोलिसिस और एचएमपी वाया यूरिक एसिड पाथवे. और आपके बॉडी में मान लीजिए आपने खाना बहुत ज़्यादा खाया, तो सम पार्ट ऑफ ग्लूकोज विल बी ऑक्सीडाइज्ड फॉर एनर्जी, रिमेनिंग पार्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन. सम पार्ट ऑफ glucose will be converted into glycogen. Okay, glycogenesis, that is a storage form of glucose. Now still you have glucose in the blood, that glucose will be converted into lipids, so known as a lipogenesis. Some part of glucose will be converted into amino acids, non-essential amino acids, and some part of glucose will be converted into other sugar like ribose and deoxyribose sugar for DNA RNA, fructose sugar for important for sperms and other that, mannose, then galactose and other, you know, other mucopolysaccharide, right? So that is the fate of glucose. Now how glucose is transported, how glucose is absorbed, है ना. ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, एलिमिनेशन कैसे होता है. So how there is absorption, distribution, metabolism of glucose. So if you understand this, you can understand the diabetes. So we are reaching towards the metabolism. Okay? Metabolism की तरफ अपन जा रहे हैं. तो different glucose transporters, क्या है भाई? Different glucose transporters, ना. आपके GIT में स्टार्च का ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज एब्सॉर्ब कैसे होगा? तो in the GIT there is one hormone, there is one enzyme known as alpha glucosidase. There is one enzyme known as alpha glucosidase. In the GIT there is one enzyme known as alpha glucosidase. Now this alpha glucosidase will break down the disaccharide into monosaccharide. तो जो अल्फा ग्लूकोसिडेज नाम का एंजाइम होता है ये, that will break down the disaccharide into monosaccharide, है ना. डायबिटीज में क्या होता है? ब्लड शुगर बढ़ जाता है, तो there is increase the blood sugar, है ना. So you can prevent the absorption by blocking this enzyme. It is one of the target for anti-diabetic drug, वो अपन देखेंगे डायबिटीज में. But before that, different glucose transport, right? Glucose transporter. There are different glucose transporter. ये क्या होते हैं? Glucose transporters, they are nothing but the proteins. They are the transport and absorption proteins. They are the proteins. So first glucose transporter is a glucose transporter 1, glucose transporter 2, 3, 4, 5, and sodium glucose transporter, ये GLT, ये GULT. Okay? So glucose transporters, they are the proteins. They helps in the absorption of glucose, because absorption of glucose takes place by carrier mediated transport, है ना. जो है ना पैसिव कैरियर mediated diffusion, है ना. So ये GULT1 means glucose transporter 1 present in the brain. ये कहाँ पे होता है? ब्रेन में होता है. GULT1 present in the brain, kidney and placenta and erythrocyte, मतलब क्या? RBC. So GULT1 is present in the brain, kidney, placenta, erythrocyte. What is the role? Uptake of glucose, मतलब क्या है? Entry of glucose in the brain, entry of glucose in the kidney,
kidney cells, entry of glucose in the placental cell, entry of glucose in the RBCs. RBC जो होता है erythrocytes, जैसे बोला RBC are totally dependent on the glucose for energy. RBC में ना, RBC में, ब्रेन में, किडनी में, प्लासेंटा में ग्लूकोज कैसे जाएगा? सो GULT1 will transport glucose from blood to these organs. GULT2 is present in the liver, pancreas, beta cells of pancreas, then intestine and kidney. So it will rapidly uptake and release of glucose. GULT3 मतलब glucose transporter present in the brain, kidney, placenta, so again responsible for the uptake of glucose. GULT4 transporter again present in the heart muscle, skeletal muscles and adipose tissue. Again insulin stimulated uptake. Insulin will stimulate the uptake of glucose via this GULT4. GULT5 का आप होता है glucose transporter 5 present in the small intestine, responsible for the absorption of glucose. Responsible for the absorption of glucose. Next होता है sodium glucose transporter. Sodium dependent glucose transporter present in the small intestine, kidney, right? Small intestine and kidney. So active uptake of glucose. So if you know this glucose transporter, ये uptake कैसे होगा, है ना? अपने ग्लूकोज के बारे में देखा है, मोनोसैकेराइड के बारे में देखा है, के बाद में क्या है ना, उसके बाद में उसका एब्सॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले ये सब कार्य करता है। ये कौन है? ये सब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, दे आर द डिस्ट्रीब्यूशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एब्सॉर्प्शन। GULT1, 2, 3, 4, 5 एंड सोडियम GULT, ये GULT, they transport the oxygen, they transport the glucose to a different tissue. Okay, now next part है utilization of glucose in the body. आपकी बॉडी में ग्लूकोज कहाँ पे यूटिलाइज होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी, यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी. So fate of glucose we have seen. So whatever fate of glucose we have already explained you. So absorption of sugar takes place from small intestine by active transport, and for that you need a glucose transporter, right, in the monosaccharide form. Through a portal circulation, whatever glucose is absorbed, that will be transported to a liver. Through a portal circulation, glucose will pass to a liver before reaching to a blood. So liver is a first filter of your sugar. सबसे पहले कि जो भी आपने ग्लूकोज, जो भी आपने स्टार्च वगैरह ले लिया है, वो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा. ग्लूकोज विल बी एब्सॉर्ब एंड फ्रॉम योर जीआईटी से ब्लड कहाँ पे जाएगा? लिवर में. सो लिवर में पहले जाता है ग्लूकोज. नाउ लिवर डिसाइड करेगा कि ग्लूकोज को ब्लड में भेजना है या फिर ग्लूकोज का ग्लाइकोजन बनाना है या फिर ग्लूकोज का लिपिड बनाना है. कौन डिसाइड करता है भाई? लिवर. लिवर मतलब क्या होता है? खतरनाक ऑर्गन है सबका, है ना. जैसा होता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, है ना, माँ का, भाई का, बाप का, सबका बदला लेगा तेरा फैसल. तो सबका फेट डिसाइड करने वाला कौन है? लिवर. तो लिवर इज द फर्स्ट ग्लूकोज फिल्टर. सो इन द लिवर देर आर टू मैकेनिज्म्स. ओके, द प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय द एंड प्रोडक्ट एंड हार्मोन्स. द प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय एंड प्रोडक्ट एंड हार्मोन. मतलब ग्लूकोज का क्या होगा ये कौन डिसाइड करेगा? ना आप डिसाइड करोगे ना मैं डिसाइड करूंगा. ग्लूकोज का क्या होगा ये कौन डिसाइड करेगा? लिवर डिसाइड करेगा. तो लिवर विल डिसाइड द फेट ऑफ ग्लूकोज. नाउ फर्स्ट, है ना, मान लीजिए आपके ब्लड में शुगर लेवल कम है ना. देर आर टू कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन, है ना, मान लीजिए यू हैव ब्लड शुगर लेवल लेस, आपके ब्लड में शुगर लेवल नहीं है. दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? आपके ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा है. सो देर आर टू कंडीशन. फर्स्ट, विड्रॉल ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द ब्लड. क्या है? लिवर क्या कर सकता है? लिवर विल डू टू थिंग्स. फर्स्ट, विड्रॉल ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द ब्लड. कब करेगा? व्हेन योर ब्लड हैज अ हायर ग्लूकोज. व्हेन योर ब्लड हैज अ हायर ग्लूकोज लेवल, व्हाट विल हैपन? लिवर विल विड्रॉ ए कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द ब्लड. आपके ब्लड में जो ग्लूकोज है वो लिवर बुलाएगा, चल बे इधर आ, चल, तू बहुत ज्यादा नखरे कर रहा है. बॉडी में ब्लड में अगर ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया, दैट विल रिजल्ट इन द डायबिटीज. लिवर का काम क्या है भाई? लिवर क्या करेगा? चलो ग्लूकोज ब्लड में बढ़ गए ना,
तो तेरे को कार्य कम लगाता हूँ, चला आ जाए इधर. So liver will withdraw the carbohydrate from blood if blood level of glucose is high. So uptake of monosaccharide from the blood and convert that glycogen. Okay, uptake of glucose from the blood and convert it into glycogen. So liver will convert glucose into glycogen, or that glucose will be oxidized for energy, or it will be converted into lipids and amino acids. तो ग्लूकोज, अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है तो लीवर क्या करेगा, उसको बुला के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, या फिर उसको बुला के मेटाबोलाइज कर देगा, या फिर उसको बुला के लिपिड बनाएगा, या फिर अमीनो एसिड बनाएगा. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन इफ योर ब्लड शुगर लेवल इज हायर. अगर आपके ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज है तो लिवर क्या करेगा, विड्रॉल ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द ब्लड. अगर मान लीजिए आपके ब्लड में शुगर लेवल क्या है, कम है, तो इफ देयर इज अ लो ब्लड शुगर लेवल, सो व्हाट विल लिवर डू, लिवर विल रिलीज द ग्लूकोज. लिवर क्या करेगा, ग्लूकोज रिलीज करेगा. कहाँ पे, ब्लड में, क्योंकि ब्लड में अगर ज़्यादा है तो वहाँ से रिमूव करेगा, ब्लड में अगर कम है तो वहाँ पे रिलीज करेगा. नाउ how liver will release the glucose, release of glucose by liver in the blood. So what will happen, so there is a breakdown of glycogen, so formation of glucose from glycogen, so glycogenolysis will be there. And if there is no glycogen, then liver will synthesize the glucose, gluconeogenesis. So liver controls the glucose level of your blood. Liver control करता है glucose level. Now with the help of insulin, because for the metabolism, for the oxidation of energy and utilization of glucose, insulin is required. Okay? Now liver cells are freely permeable to the glucose. Insulin will increase the uptake of glucose in the extra hepatic tissue. बाकी टिश्यू में ग्लूकोज को जाने के लिए इंसुलिन लगता है, लिवर में नहीं लगता है, लेकिन बाकी में ये लगता है, राइट. So that's how there is utilization of glucose in the body. Utilization of glucose in the body. Now next one is a metabolism of glucose. एक बार ग्लूकोज सेल के अंदर गया, सेल के अंदर जाने के लिए ग्लूकोज को कौन हेल्प करता है, इंसुलिन. तो ग्लूकोज ब्लड में है, ग्लूकोज आपके मसल सेल में जाना चाहिए ताकि वो मेटाबोलाइज हो सके, वहां से एनर्जी मिले, राइट. नाउ फॉर दैट इंसुलिन इज रिक्वायर्ड. सो व्हाट इंसुलिन विल डू, it will take a glucose molecule and it will go inside the cell and it will drop, सेल के अंदर जाके छोड़ देगा ताकि सेल उसको मेटाबोलाइज कर सके. अगर इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज मेटाबोलाइज होता ही नहीं, दैट्स व्हाई ग्लूकोज यूरिन से बाहर निकलता है, उसको अपन डायबिटीज बोलते हैं. So if there is no insulin, glucose will not be metabolized in the body, and that's what we call as a diabetes. Now metabolism of glucose. So metabolism of glucose means oxidation of glucose. क्या बोलेंगे, oxidation of glucose. So oxidation of glucose for what? Oxidation of glucose for getting an energy, to get a energy, to get a energy, for getting a energy or for providing the energy. So oxidation of glucose for getting energy, oxidation of glucose to the pyruvate, oxidation of glucose to the pyruvate, oxidation of glucose to the pyruvate. ग्लूकोज का ऑक्सीजन होकर क्या बनेगा, पायरुवेट बनेगा. इन केस ऑफ एरोबिक कंडीशन, इन केस ऑफ एरोबिक कंडीशन ग्लूकोज विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू पायरुवेट और पायरुविक एसिड. ग्लूकोज विल बी ऑक्सीडाइज्ड इन अ पायरुवेट और पायरुविक एसिड, which is known as aerobic or in presence of, aerobic मतलब क्या, in presence of oxygen. In presence of oxygen, glucose will be oxidized to the pyruvic acid, to the pyruvic acid or pyruvate, known as a aerobic glycolysis, known as a aerobic glycolysis. So glucose will be oxidized to pyruvate, okay, and complete oxidation of glucose that is converted into carbon dioxide and water. So after glycolysis, there is a Krebs cycle which will completely oxidize the glucose into carbon dioxide and water. और अगर ऑक्सीजन नहीं है, in absence of oxygen, so glucose in absence of oxygen, glucose is converted into lactate. In absence of oxygen, glucose is converted into lactic acid or lactate. It is known as anaerobic glycolysis. Okay? And the metabolic cycle known as a glycolysis.
ग्लाइकोलिसिस आल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे। क्या बात है? ईएमपी। ईएमपी मतलब क्या भाई? एमडेन मेरॉप परनाज पाथवे। ईएमपी पाथवे मतलब क्या है? ग्लाइकोलिसिस आल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे। सम बुक्स हैज गिवन ओनली ईएम पाथवे। कुछ कुछ बुक्स में सिर्फ ईएम पाथवे लिखा है। ईएम मतलब एमडेन मेरॉप पाथवे, पी नहीं लिखा है। वो तीनों में पी गायब कर दिया। पी मतलब क्या है? तीसरा साइंटिस्ट है। ये क्या है? साइंटिस्ट है परनाज, परनाज ना। एमडेन नाम का एक साइंटिस्ट है भाई, मेरॉप नाम का एक साइंटिस्ट है, और परनाज नाम का है। तो इन तीनों ने, तीन दोस्त थे, तीनों ने क्या किया? ग्लाइकोलिसिस खोज की निकाला। ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो ईएम पाथवे और एमडेन मेरॉप पाथवे और ईएमपी पाथवे, एमडेन मेरॉप परनाज पाथवे, एमडेन मेरॉप परनाज पाथवे। राइट नाउ ऑक्सीडेटिव पाथवे मतलब क्या? व्हाट डू मीन बाय ऑक्सीडेटिव पाथवे? इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ऑक्सीडेटिव पाथवे मींस ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर गेटिंग अ एनर्जी। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर गेटिंग अ एनर्जी। सो glucose will be oxidized into carbon dioxide and water for getting a energy, known as oxidative pathway. But there are some pathway which are not a कुछ पाथवे ऐसे होते हैं जिनका पर्पस एनर्जी नहीं है। तो जैसे ऑक्सीडेटिव पाथवे का पर्पस क्या होता है? टू गेट ए एनर्जी। सो इन ऑक्सीडेटिव पाथवे यू विल गेट एटीपीज, बट देयर आर सम पाथवे व्हिच आर कॉल्ड एज नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे। इन दैट यू विल नॉट गेट एनर्जी। जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसमें कोई एनर्जी नहीं मिलेगा आपको, है ना। जैसे आप ऐसा ग्लाइकोजिनोलाइसिस या फिर ग्लाइकोजिनेसिस, इसमें कोई एनर्जी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो विल सी इन अपकमिंग स्लाइड। नाउ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन थ्री पार्ट्स। मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन थ्री पार्ट। मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज विल टेक्स प्लेस इन थ्री पार्ट। थ्री पार्ट और थ्री फेजेस। फेज वन क्या है? फेज वन में होगा ग्लाइकोलिसिस। फेज वन इज अ ग्लाइकोलिसिस। फेज टू क्या है? इन ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट और लैक्टेट डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन है तो ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। इन केस ऑफ एरोबिक glycolysis, glucose is converted into pyruvate. In case of anaerobic glycolysis, glucose is converted to lactate. फेज वन में ग्लाइकोलिसिस, फेज टू में क्या होगा? सो एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज अ पायरुवेट। तो पायरुवेट विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू कार्ब एसिड इन द क्रेब साइकिल, टीसीए साइकिल, एंड लास्टली there is a TCA cycle. So glucose metabolism that occurs in a three phases, phase 1, phase 2, phase 3. तो रिमेनिंग पॉइंट्स विल टेक टुमारो बिकॉज लाइव में अभी कमी है। लाइव में है ना, मतलब 1.5 घंटा सुन लिया तो बहुत हो गया ऐसा है। तो मिनिमम 2 आवर्स 3 आवर्स सेशन होना चाहिए, तब जाके सिलेबस कंप्लीट होगा। तो थोड़ा सा हैबिट डेवलप करो। यू हैव टू डेवलप योर हैबिट टू लिसन एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स। यू हैव टू डेवलप हैबिट। लास्ट टाइम मैंने आई यूज टू कंडक्ट लेक्चर्स 3 times a week, मतलब है ना, Wednesday, Saturday, Sunday. But from last year, I have continuing the daily. Okay? So remaining part will take tomorrow. So tomorrow we'll see the glycolysis. Tomorrow we'll see the glycolysis and Krebs cycle. Tomorrow we'll see the glycolysis and Krebs cycle. This slide I will repeat tomorrow again. ये slide भी repeat करूँगा मैं। I hope everybody is getting, समझ रहा है आपको सबको। If you are getting right, yes in the comment box. अगर आपको समझ रहा है तो yes लिखिए कमेंट बॉक्स में।